Hello students, good morning and welcome to my channel. Okay, my channel ना हला Physics by GS भाई. Okay students, देखो previous class से पढ़ा ही थिला resistances in series and resistances in parallel. Okay students, so आज हमें देखिबा ଗୋଟେ new topic that is cells in grouping of cell. Okay students, देखो grouping of cells. Very important, grouping of cells. Okay students, so बड़ा मन रखो student, grouping of cells are of two types. कौन कौन? Number one, that is cells in series. देखो students, cells in series. Then number two, cells in parallel. Okay student, देखो syllabus रे अछि CHSE. Okay, cells in series और हला cells in parallel. So what is called cells? Cells माने देखो students, cells माने होची बैटरी. ओके स्टूडेंट, बैटरी. तो बैटरी रो काम कोन? सेल्स रो काम होची टू कन्वर्ट करबा. देखो टू कन्वर्ट ओके केमिकल एनर्जी, टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू व्हिच एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, देखो से कन्वर्ट करिवो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, दिस इज ऑल अबाउट सेल. सेल रो काम कोन? टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमें देखिबा सेल्स इन सीरीज. ओके स्टूडेंट्स, देखो सेल्स इन सीरीज. सेल्स इन सीरीज नंबर वन, सेल्स इन सीरीज. ओके, तो फर्स्ट हमें देखिबा डायग्राम करो. समस्त डायग्राम करो. डू द डायग्राम. देखो एटा टू बैटरी नेबा फर्स्ट सेल्स. देखो फर्स्ट सेल, देन सेकंड सेल, तापर नेबा n नंबर ऑफ सेल्स. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, इथे हमें नहीं जीवा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर. मन रखो कैपिटल आर. आर माने कोन? आर माने हो स्टूडेंट देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. एक्सटर्नल, ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ओके, एटी देखो सपोज दिस इज ए टर्मिनल, सपोज दिस इज बी टर्मिनल. ए बी टर्मिनल देखो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, एटा में ईएमएफ नहीं जीवा. ईएमएफ माने होची देखो एनी, ईएमएफ टोटल ईएमएफ एनी. और एठी नाबा इंटरनल रेजिस्टेंस फर्स्ट बैटरी रो. देखो इंटरनल रेजिस्टेंस आर, देन सेकंड बैटरी रो आर, देन एन नंबर ऑफ बैटरी रो. ओके, एन देखो सब मन रखो आर हला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल एन माने होची नंबर ऑफ सेल्स. देखि दिया स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सेल्स. देन ई माने कोन? ईएमएफ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. देखो ईएमएफ, ई डॉट एम डॉट एफ माने कोन? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, ए फार्मूला अछि देखो ईएमएफ रो फार्मूला W by Q. नेक्स्ट क्लास से पढिबा व्हाट इज कॉल्ड ईएमएफ, व्हाट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस आर. आर माने होची मन रखो स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट क्लास से पढिबा एटा इंटरनल रेजिस्टेंस. देखो मन रखो आर माने होची एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एन माने होची नंबर ऑफ सेल्स, ई माने होची ईएमएफ और स्मॉल आर माने होची इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमें देखिबा सेल्स इन सीरीज. देखो तो केतेबेले सीरीज को आजिबो? केतेबेले सीरीज को आजिबो? लिखि दियो cells are said to be, cells are said to be connected in series. Connected in series, connected in series if negative terminal, if negative terminal of first is connected to positive terminal of the second. देखो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सिंपल एंड सो ऑन. देखो कोन हला सीरीज के को आजिबो सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज केते बेले इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट. देखो नेगेटिव फर्स्ट बैटरी. ओके, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट is connected to positive terminal of the second. Okay, the negative, then first asila the second of first. Cells are said to be connected in series if negative terminal of first, okay, first is connected to positive terminal of the second and so on. This is called cells in series. Dear students, next hame dekhiba. देखो नेक्स्ट
consider n number of cells of EMF E, n number of cells, n number of cells of EMF E, and internal resistance R, small r is connected across the two terminal with external resistance capital R. देखो स्टूडेंट्स এটা কোন কহিলা দেখো consider n number of cell, এটি n number of cell লাগি দেখো 1 স্টার্ট হই n যায় যাইছি 1 ডট ডট 2 ডট ডট n যায় যাইছি দেখো consider n number of cells of EMF E, EMF টা E নিয়ে গেল EMF E and internal resistance small r, okay, is connected across the two terminal A और B रे देखो A और B रे connection जन A और B रे terminal to terminal with external resistance capital R. R is the external resistance. It is what is the direction of current? This is the direction of current देखो. This is the direction of current. I amount of current flow है देखो. Direction of current देखो. Positive to negative जीवो. Okay. Positive to negative जीवो देखो. This is the direction of current. This is the direction of current. I देखो. Okay students. Okay. n number of cell लागी छी. तार EMF टा E निया गला. और R टा कौन है? Internal resistance. और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस माने कैपिटल आर. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें देखिबा एठी फार्मूला कोन हबो देखो टोटल ईएमएफ फार्मूला एटा टोटल ईएमएफ माने कोन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन कोन हबो देखो टोटल ईएमएफ फार्मूला हम n into e नेछु any देखो दिस इज द टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन any. नेक्स्ट टोटल रेजिस्टेंस of the circuit कोन हबो देखो टोटल रेजिस्टेंस फार्मूला एठी हो फार्मूला R plus n R देखो कि R माने कोन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब R माने होची कोन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R माने होची एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल r माने जानिछो इंटरनल रेजिस्टेंस ओके स्टूडेंट देखो फार्मूला कोन हला टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हला कैपिटल R प्लस स्मॉल n into स्मॉल r. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें देखिबा करंट ऑफ बाहर करो. नेक्स्ट टोटल करंट ऑफ द सर्किट टोटल करंट कोन हबो देखो स्मॉल i रो फार्मूला मन रख स्मॉल i रो फार्मूला हबो देखो टोटल करंट रो फार्मूला हबो टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस. एटा वेरी सिंपल देखि दे मन रख स्टूडेंट फार्मूला देखो टोटल करंट ऑफ द सर्किट माने सर्किट केते वोल्ट करंट फ्लो हेबो हम के जानिबा I इज इक्वल टू देखो टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस. ओके स्टूडेंट्स तो फार्मूला पुट करो टोटल EMF ता कोन n नै छु टोटल रेजिस्टेंस कोन R plus n R पुट कर दियो दैट इज I रो फार्मूला हला देखो दैट इज n बाय R plus n R. Equation 1 the mean formula. This is the formula of current Ne by R plus NR. Okay Ne by R plus NR. Next हमें देखिबा दुईटा केस होची देखो यार case 1 case 2. Okay फर्स्ट हम देख case 1 रा कोन हबो देखो if R very well less than NR ता माने कोन NR टा बड़ हबो R टा स्मॉल हबो देखो तो हम का निगलेक्ट करबा R को निगलेक्ट करबा देखो सो इक्वेशन 1 becomes कोन हि जबो देखो इक्वेशन 1 टा भल से बुझो if R very well less than NR माने कोन हम R को निगलेक्ट करबा तो कोन हबो इक्वेशन 1 टा दैट इज I is equal to जीवो माने R 0 पुट करबा दैट इज Ne by NR. देखो स्टूडेंट्स Ne by NR तो NN कैंसिल तो I रा वैल्यू केते हला दैट इज I रा वैल्यू हला देखो स्टूडेंट्स E by R देखो I is equal कोन हला E by R इक्वेशन 2 दे दियो I is equal to E by R ता माने कोन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n अछि केठी n नाही माने कोन करंट इज independent of number of cells. लिखि दियो equation 2 shows लिखि दियो स्टूडेंट्स equation 2 shows कोन शो कला equation 2 this equation 2 shows current I is independent
independent of n. Okay, independent of n. Then there is, लिखी दिया, there is no current increases, no current increases, no current increases with number of cells increases. माने करंट इंक्रीज करिवो ना, इंडिपेंडेंट हला माने कोन करंट इंक्रीज करिवोनी, I is equal to E bar, this is the formula, केस मान formula, I is equal to E bar माने करंट इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल, n माने कोन नंबर ऑफ सेल्स. ओके, इक्वेशन 2 देखो. नेक्स्ट हम देखियो केस 2. केस 2 टा कोन हबो देखो, केस 2 टा, केस 2 हबो देखो, केस 2 तर ऑपोजिट देखो, इफ r very greater than nr. एबे कोन हला देखो, ए r टा कोन हला बिगर हला और nr टा स्मॉल हला देखो. सो इक्वेशन 1 becomes कोन हबो देखो, दैट इज i रो फार्मूला ne by हम कहा nr को 0 nr को हमें 0 पुट करिबा तो कोन हला ne by r देखो. इक्वेशन 3, इक्वेशन टा कोन, इक्वेशन 3 shows, इक्वेशन 3 shows I मान करंट I is independent of n. n माने कोन नंबर ऑफ सेल, independent of n. देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन 3 shows current I is independent of dependent, is dependent हबो, is dependent हबो देखो, independent नहीं dependent n. इक्वेशन 3 shows current I is dependent on n, माने I रो वैल्यू बोल, n रो वैल्यू बोलले I रो वैल्यू बढ़िबो. ओके स्टूडेंट्स, here the current increases, here the current increases with increase in number of cells n, जोटा है number of cells n. देखो इक्वेशन 3 shows current I is dependent on n, then here the current increases with increasing number of cells, माने n रो वैल्यू बोलले I रो वैल्यू बढ़िबो, माने number of cells रो वैल्यू बोलले current रो वैल्यू बढ़िबो. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास से हमें पढ़िबा, नेक्स्ट क्लास से सेल्स इन पैरेलल. देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास से पढ़िबा सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल पढ़िबा, ता संगे संगे व्हाट इज कॉल्ड ईएमएफ पढ़िबा, देन व्हाट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़िबा, व्हाट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके स्टूडेंट्स, ओके जदी ए वीडियोटा जदी भल लागुची माने काइंडली लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियो. ओके स्टूडेंट्स, ओके जदी वीडियो जदी क्लास जदी भल लागुची माने काइंडली समस्त को शेयर कर दियो. ओके स्टूडेंट्स, और एमती वीडियो सब आसीबो, भल भल वीडियो आसीबो आपको. ओके स्टूडेंट्स, बाय.